Hello and welcome you all. Dear students, today's topic is frequency modulation FM. We will be solving numericals related to this topic. Before this, I have already created the video related to derivations of frequency modulation. Do watch that video. I will provide the link in the description box. One small request. प्लीज वॉच द वीडियोज इन अ सीक्वेंस. जैसे देखो ये तीनों सब्जेक्ट्स है पीसीएस एसएस एंड कंट्रोल सिस्टम्स. दे आर इंटरलिंक्ड, मतलब हर एक चीज के लिए कुछ पिछले वीडियो का रेफरेंस लगता है. आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट. जहां पे भी कुछ रेफरेंस लगता है आई यूज टू ब्रश अप द थिंग्स, बट यू शुड वॉच द वीडियोज इन अ सीक्वेंस. ओके, now let us, without wasting the time, let us start the today's session. We will be solving numericals related to FM. This is for the subject PCS unit number 3. First problem, FM wave is represented by, this is the given equation. Calculate carrier and modulating frequency. Second part, modulation index and maximum deviation. थर्ड पार्ट, पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रजिस्टर. अब देखो हर एक चीज के लिए जहां जहां न्यूमेरिकल है, आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ फॉर्मूले. उतने ही फॉर्मूले आपको करना है जो जो न्यूमेरिकल्स के लिए लगते हैं. अननेसेसरली डोंट ट्राई टू मेमोराइज सम एक्स्ट्रा फॉर्मूले. सो दीज आर द रिक्वायर्ड फॉर्मूले. आई हैव मेड द लिस्ट. फर्स्ट फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एफएम. ये EFM ये नोटेशन है. EC इज द एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ कैरियर वेव. साइन ओमेगा CT, ओमेगा C इज कैरियर फ्रीक्वेंसी विच इज एंगुलर कैरियर फ्रीक्वेंसी. MF मॉड्यूलेशन इंडेक्स, साइन ओमेगा MT. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिनोटेड बाय MF और बीटा. दो नोटेशंस है. कोई भी नोटेशंस एग्जाम में पूछा गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो डू रिमेंबर बोथ द नोटेशंस, MF और बीटा, विच इज डेल्टा अपॉन FM. डेल्टा इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन. Frequency deviation is given as delta is equals to kf into fm. kf is some constant. अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों का. डेरिवेशन में हमने डेल्टा का वैल्यू लिया था k em into fc. k और kf ये कांस्टेंट है, ऐसा याद रख लो. मतलब ये fc into em इसका सबका वैल्यू kf में एडजस्ट किया है, तो ऐसे याद रखो. मेक द थिंग्स मोर सिंपल. न्यूमेरिकल्स के लिए हमें ये फॉर्मूला लगेगा. देन पावर डिसिपेटेड का ये फॉर्मूला P is EC square upon 2R. R is the value of resistance. So we will solve the numericals, then this formula will be more clear to you. अब देखो ये दिया हुआ इक्वेशन है. सो रिलेटेड टू दिस, हाँ वन मोर थिंग, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने ऐसे लिखा है EC साइन, क्योंकि अगर दिया हुए इक्वेशन में साइन है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे. अगर सपोज यहाँ पे दिया है 10 cos, we would have written this term as cos. Okay, presently sin दिया है तो I will first write the standard equation as it is. EFM is equals to EC sin of omega CT plus MF or beta, any notation will do, sin omega MT. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है. और एक चीज देखो, हर एक टॉपिक पे मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि you will be in a position to solve any type of numerical. मतलब I am trying to cover all the variations in the numerical. Okay, तो ये दिया हुआ standard, this is the standard equation, this is given equation. Compare it with standard equation. If you compare, we can easily write the values. जैसे EC मतलब amplitude, magnitude of carrier wave, EC is 10. अब देखो यहाँ पे sin of, यहाँ पे जो टर्म है 5 into 10 raised to t है, यहाँ पे ओमेगा CT है. therefore I will write ओमेगा C is equals to 5 into 10 raised to 8. सिंपल है. ओमेगा CT यहाँ पे है, यहाँ पे 5 into 10 raised to 8t है, तो I have written ओमेगा C is 5 into 10 raised to 8. सेम वे यहाँ पे MF है, MF और बीटा कोई भी नोटेशन हो सकता है. MF that is modulation index is 4, so I will directly write MF is equals to 4. ये टर्म देखो, यहाँ पे है साइन ओमेगा MT, यहाँ पे है साइन 1250t. दैट मीन्स ओमेगा M is equals to 1250. These are the values which I have got. I have written by referring the given equation with the standard equation. अब पहला पार्ट, कैरियर और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. ये कैसे कैलकुलेट करना है? ओमेगा C is the frequency in terms of rather it is angular frequency. तो हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. वी नो द स्टैंडर्ड इक्वेशन. ओमेगा इज 2 पाई एफ. सिंस यहाँ पे ओमेगा C है, आई विल राइट इट एज 2 पाई FC is equals to 5 into 10 raised to 8. therefore FC is equals to 5 into 10 raised to 8 upon 2 pi. तो ये अगर कैलसी पे सॉल्व करेंगे हम लोग तो FC का वैल्यू आएगा 79.57
megahertz. This is one answer. I have got the value of FC 79.57 megahertz. Likewise FM calculate करना है, मतलब frequency of modulating signal, that is modulating frequency. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने पास ओमेगा एम का वैल्यू है. सेम टेक्निक, आई विल राइट इट लाइक दिस 2 पाई एफ एम. देखो ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, सो ओमेगा एम इज 2 पाई एफ एम विच इज इक्वल्स टू 1250. देयरफॉर एफ एम इज इक्वल्स टू 1250 अपॉन 2 पाई. इफ यू सॉल्व दिस ऑन द कैलकुलेटर, दिस आंसर इज 198.94 हर्ट्ज. डू रिमेंबर इसका यूनिट मेगा हर्ट्ज है. मेगा मतलब 10⁶ हर्ट्ज. तो ये एफएम का आंसर आ गया. दिस इज द सेकंड कैलकुलेशन ऑफ पार्ट 1. पार्ट 1 में पूछा है कैरियर और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. वी डिड द कैलकुलेशन. सेकंड पार्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड मैक्सिमम डेविएशन. अब देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स और मैक्सिमम डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए अपने पास ये पूरा लिस्ट फॉर्मूला का है, वो रेफर करना है. अब देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए ये फॉर्मूला हमने लिखा है एम एफ और बेटा इज डेल्टा अपॉन एफ एम. लेकिन डेल्टा पता नहीं है. बट मेक द थिंग सिंपल. फ्रॉम द गिवन इक्वेशन आई हैव रिटन स्टैंडर्ड इक्वेशन, और कंपेयर करने के बाद डायरेक्टली हमारे पास एम एफ का वैल्यू आया है एम एफ और बेटा विच इज इक्वल्स टू 4. सो यू डोंट नीड टू डू एनी कैलकुलेशन एज फार एज MF is concerned. So value of MF is 4. MF is modulation index. Then maximum deviation. Don't get confused as far as notations are concerned. This can be delta or it can be delta max, whatever. But not the same thing. So अब देखो कैसे सोचना है. डेल्टा का एक इक्वेशन अपने पास है KF into EM. KF is not known, so we cannot use this formula. But we have this formula MF or beta is delta upon FM. So इससे डेल्टा निकाल सकते हैं. You can write this formula like this. पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखता हूँ डेल्टा अपॉन एफ एम. देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू एम एफ इंटू एफ एम. वेरी सिंपल. ये एफ एम यहाँ पे ट्रांसफर किया. वी हैव बोथ द वैल्यूज. एम एफ इज इक्वल्स टू 4 इंटू एफ एम. जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड इट इज 198.94. सो इफ यू सॉल्व दिस then this answer will be 795.77 hertz. This is the value of maximum deviation. Third part, power dissipated in 5 ohm resistor. We have direct formula. P is EC square upon 2R. So P is equals to EC square upon 2R. Put the values. Value of EC we have already written. It is 10 square, that is 100 upon 2 into R. Value of R is given, that is 5 ohm. 2 into 5. So power dissipated will be 10 watt. Therefore answer of power dissipated will be 10 watt. Let us solve some different kind of numerical. Next problem, an angle modulated wave with carrier frequency 2 pi into 10⁻⁻5. मतलब ये ओमेगा c का वैल्यू दिया है. कैरियर फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू 10⁻⁻5. अब देखो ये कैसे समझेगा एग्जाम में कि ओमेगा सी है या एफ सी है. बहुत सिंपल है. ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई इंटू एफ. वैसे ये ऑलरेडी 2 पाई इंटू एफ दिया है, तो एफ सी विल बी 10⁻⁻5. सो इट इज ओमेगा सी. ओमेगा सी इज 2 पाई. मतलब ऐसे याद रख लो, पाई टर्म है तो इट इज ओमेगा सी. ओके. फिर साई एफ एम. नोटेशन इज मटेरियल, डोंट गेट कंफ्यूज. साई एक अलग नोटेशन यूज किया है 10 cos. जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बताया था, यहाँ साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है. उससे प्रॉब्लम के कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. वी विल राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंगली. ओके. फाइंड पावर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड बैंडविड्थ. बैंडविड्थ के लिए मैंने एक फॉर्मूला ऐड किया है. सो बैंडविड्थ इज 2 डेल्टा एफ एम मैक्स. ओके. अब देखो ओमेगा सी मैंने लिखा. रिलेटेड टू दिस राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन. जैसे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिखा था, यहाँ साइन लिखा था. इन द गिवन इक्वेशन कोसाइन टर्म इज देयर, सो आई विल राइट द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लाइक दिस. ई सी कॉस, यहाँ पे कॉस है इसलिए साइन के बदले में मैंने कॉस लिखा. ओमेगा सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एम टी. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. सो इफ यू कंपेयर इट with this standard equation, we can easily write the values. EC is equals to 10. जैसे देखो यहाँ पे EC है, यहाँ पे 10 है. So EC is 10. ओमेगा C ऑलरेडी हमने लिख के रखा है.
plus 5 sin 2000 pi t, मतलब ये जो 5 वैल्यू है that is value of mf. So mf, that is modulation index, is equals to 5 and omega m, this value यहाँ पे देखो 2000 pi t है, यहाँ omega mt है. So omega m is 2000 pi, ये ओमेगा एम का वैल्यू है. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कैलकुलेशन, पावर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. अब देखो पावर का अपने पास एक ही फॉर्मूला है. सो पावर इज इक्वल्स टू ई सी स्क्वायर अपॉन 2r. लेट अस पुट द वैल्यूज. वैल्यू ऑफ ई सी इज 10, सो इट इज 10 स्क्वायर अपॉन 2r. अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन में r का तो वैल्यू दिया नहीं है. So if such thing happens in any subject, your answer will be in terms of notations. तो R as it is रहेगा क्योंकि R का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है. So it is 100 upon 2R, that is 50 upon 2R. जैसे मैंने बताया क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया है, so answer will be in terms of R. It's quite valid. So power is equals to 50 upon R. Unit is watt. So this is the calculation of first part. We have calculated power of modulating signal. Second calculation, this is first calculation. Second calculation, frequency deviation. अब देखो हमें डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन. जैसे पहले प्रॉब्लम में क्या था, ये एमएम अपने पास है, सो एफएम कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा लाइक द प्रीवियस सम. तो कैलकुलेशन कैसे करना है, ये ओमेगा एम का वैल्यू है. We know that omega m is 2 pi fm, which is equals to 2000 pi. Therefore ये दोनों साइड pi कैंसिल हो गए. fm is equals to 1000 hertz और 1 किलो hertz. ये fm का वैल्यू आ गया. ये इक्वेशन अपने पास है. फर्स्ट आई विल राइट द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. mf is equals to delta upon fm. Therefore delta is equals to mf into fm, which is equals to 5 into 1000, which is equals to 5000 hertz. ये वैल्यू आ गया डेल्टा का, that is frequency deviation. This is answer of second part. We have got the value of delta. अब थर्ड पार्ट, बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है. बैंडविड्थ का ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ऐड किया है, पहले ये फॉर्मूला नहीं लिखा था. सो बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा प्लस fm max. Actually fm max is the maximum fm frequency. Don't get confused. As far as notations are concerned, it is same as the value of fm which we have calculated. So this is the calculated value of fm. Let us put the values. So it is 2, value of delta is 5000 plus value of fm max, that is fm, is 1000. So it is 12,000, that is 12 kilohertz. It is 12,000 hertz, that is 12 kilohertz. So this is the value of bandwidth. Now let us solve some different kind of numerical. Next problem, a carrier is frequency modulated with sinusoidal signal of 2 kilohertz. अब देखो confusion कहाँ पे होता है. ये जो दिया हुआ सिग्नल है, इट इज क्लियरली मेंशन, अ कैरियर इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मतलब एफएम यूज किया है विथ साइनसोइडल सिग्नल ऑफ 2 किलोहर्ट्ज. सो दिस गिवन वैल्यू is the value of fm, which is 2 kilohertz, that is 2000 hertz. क्वेश्चन आ रहा है जैसे why not omega m. देखो ऐसे याद रखना है, लास्ट प्रॉब्लम में हमने ओमेगा सी लिखा था 2000 पाई टी. अगर दिए हुए इक्वेशन में, मतलब इन द गिवन इक्वेशन एंड द वैल्यू कंटेन्स पाई टर्म, अगर इसमें पाई होता है लाइक 2000 पाई टी, तो वी वुड हैव रिटन दैट given value, we would have denoted that given value by omega. ऐसे याद रखना है. इसमें पाई टर्म नहीं है, so this is not related to omega, this is related to f. और एक क्लू आप लोगों को बोलता हूं, अगर यूनिट रेडियन है तो वो ओमेगा के लिए होता है, अगर यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज ऐसे है तो हमेशा वो f होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. सो it is a sinusoidal signal of 2 kilohertz. So I have written fm is equals to 2 kilohertz, resulting in the frequency deviation of 6 kilohertz. Frequency deviation is delta, which is 6 kilohertz. These are the given values. Find first part, bandwidth and modulation index. Let us complete first part. तो पहला part bandwidth का, we have the ready-made formula. Bandwidth is 2 delta plus fm max. So like the previous sum,
It's pretty simple, just you have to put the values. Value of delta is 2 kilohertz. Since both the values are in kilohertz, I'm not making any conversion. So it is 2 plus FM max, that is, FM value of delta is 6 plus FM max is 2. So it is 16 kilohertz. This is the value of bandwidth of a signal. Next, modulation index, that is MF. We have a ready-made formula. MF is equals to delta upon FM. Value of delta is 6 upon, resulting in frequency deviation of 6 kilohertz. That means delta is 6. 6 upon FM. Value of FM is 2 kilohertz. Since both the units are same kilohertz, I am not going to make any conversion. So it is 3. This answer is 3. So value of MF is equals to 3. अब second part, ये थोड़ा different है compared to the previous numericals. If amplitude of modulating signal is increased by 2 and frequency is half, means frequency is reduced by 2, 1/2. Find maximum frequency deviation and bandwidth of new wave. अब कैसे calculation करना है? ये clearly लिखा है. If amplitude of modulating signal is increased by 2, मतलब जो ये गिवन वैल्यूज है पहले पार्ट में, इसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए FM1 बोलता हूं, एंड दिस वैल्यू इज डेल्टा 1, जो पहले पार्ट से रिलेटेड है. अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज इंक्रीज्ड बाय 2. लेट अस डिनोट इट बाय EM2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स EM1. EM1 is original amplitude. ये क्वेश्चन में दिया है amplitude of modulating signal is increased by 2. Original amplitude of modulating signal is also not known, so I have written it, I have denoted it by EM1. So EM2 is 2 times EM1 and FM2. Second sentence क्या लिखा है? Frequency is half, means FM2 is 1/2 FM1. FM1 is known, that is 2 kilohertz, so 1/2 of 2 kilohertz, that is 1 kilohertz, that is 1000 hertz. ये दो वैल्यूज आ गए. अब ऐसे सोचना है, अपने पास ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन का फॉर्मूला है. सो डेल्टा इज इक्वल्स टू KF/EM. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा मैंने, बेसिक फॉर्मूला. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेल्टा 1, देन KF इज कांस्टेंट. इट इज डेल्टा 1 इज KF/EM1. देयरफॉर आई कैन राइट वैल्यू ऑफ KF एज डेल्टा 1 अपॉन EM1. ये KF का वैल्यू आ गया. ये मैंने डेल्टा 1 के लिए लिखा है. डोंट गेट कंफ्यूज. ये पहला जो ओरिजिनल सिग्नल है जिसके लिए 2 किलोहर्ट्ज 6 किलोहर्ट्ज दिया था, दैट वैल्यू एंड व्हिच आई डिनोटेड बाय FM1 एंड डेल्टा 1. अब चेंज करने के बाद जो नए वैल्यूज आएंगे, for those values I have used the suffix 2. So EM2 is 2 EM1, FM2 is 1/2 FM1. This is given in the question. अब जैसे डेल्टा 1 के लिए लिखा है, likewise I can write डेल्टा 2 is KF. देखो KF constant है, so I am not saying KF1 or KF2, it remains as it is, into EM2. ये डेल्टा 2 का इक्वेशन लिखा है, but we have the value of KF. KF is डेल्टा 1 into EM1. Therefore I will write it as delta 2 is equals to delta 1 upon EM1. ये KF का वैल्यू यहाँ पे पुट किया मैंने into EM2. Now we have this equation. EM2, I am referring this value. EM2 is equals to 2 EM1. So same equation can be written as delta 1 upon EM1 into EM2 is 2 EM1, 2 EM1. So this EM1 gets cancelled, so delta 2 is 2 delta 1. That means new value of modulating index gets doubled compared to the original value, that is 2 delta 1. We have the value of delta 1, that is 6 kilohertz. Therefore I can directly write delta 2 is equals to 6 into 2, that is 12 kilohertz. This is the new value of frequency deviation. Now the remaining part, it is asked to calculate bandwidth of new wave. So bandwidth, we have this formula. Bandwidth is equals to 2 times delta 2 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि for the new wave mention किया है. So it is for delta 2 plus FM2 max. Now it's pretty simple. You just have to put the values. Delta 2 is 12 kilohertz. So I am keeping kilohertz as it is.
12 kilohertz plus FM2. See, this is again in kilohertz, so I'm not making any changes. FM2, this value we have already written, it is 1 kilohertz. So it is 1 kilohertz. Therefore, bandwidth is equals to 13 into 2, 26 kilohertz. This is the calculation of new bandwidth. So, dear students, this is the way how to solve the numericals as far as frequency modulation is concerned. As I mentioned at the beginning of this topic, I have covered all the types of variations for frequency modulating numericals. So that's it for today's session. Thank you. Thanks a lot.